So I hope you can all hear me. आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं and you can also see me. Great. So how to start the celebration? How to start the celebration? वितिका जी, आपने बहुत सारे लोगों से गाने गवाए हैं पिछले 2 हफ्ते में. कोई है क्या उसमें से तैयार गाने वाने के लिए? Okay. You added a lot of rhythm and celebration to a lot of participants in the thyroid. It's okay. So how to start the celebration? We can all start with a, जैसे हर प्रोग्राम में हम बोलते हैं, विद अ लिटिल स्माइल. हाँ, थोड़ा स्माइल करके कर सकते हैं, है ना. इतने सारे लोग सीरियस दिखाई देते हैं इस सेशन में भी, सो प्लीज डोंट गेट सो सीरियस. नहीं तो आई मीन सम ऑफ यू लुक सो डेड सीरियस, वी कांट फिगर आउट वेदर यू आर डेड और यू आर सीरियस. ओके, एंड इन सम केसेस देयर आर किड्स आल्सो present who are poking their heads or trying to see. That's wonderful. Be like them. We got to learn a lot from the kids. Okay. So I welcome so many of you who have joined this for the first time, जिन्होंने पहली बार ये ज्वाइन किया है. और ये महीने तो हर महीने तो होता है ये, बट इसमें जो प्रोसेस होता है वो वंस इन अ लाइफ टाइम होता है, वो रिपीट नहीं होता है. थोड़ा सा सीधे बैठेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, है ना. कैमराज ऑन रखिए, बिकॉज समथिंग मोर देन व्हाट यू कैन इमेजिन इज गोइंग टू कम टू यू. आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, बट ये आपके पास आ रहा है. तो वंस अगेन फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रॉम पीपल फ्रॉम वेरियस प्रोग्राम्स. तो इसमें आगे बढ़ेंगे तो कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, खासकर मेदीनी वालों के लिए, जो गर्भाधान से रिलेटेड है. तो बाकी लोग उसको इग्नोर करेंगे. ओके, सिर्फ आपको जो बोला जाएगा आप वो करेंगे. ओके, सो ऑन दैट नोट, let me look for the person who's playing such an important role in everyone's life, right? मेरी लाइफ में तो बहुत अच्छा रोल प्ले किया, मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी. तो let me spot him. He's not easy to. Yes, you can sit with your family, not an issue. Yes. So So, a very important Purnima, क्योंकि ये पूर्णमासी को अगर आपने ठीक से सेलिब्रेट कर लिया, then you can touch a dimension which is at present not in your experience. By next महाशिवरात्रि, जब अमावस्या आती है, अमावस्या, when we say no moon day, what does that mean? No moon day in English doesn't mean anything. अमावस्या means a lot. नो मून डे, ये सब अंग्रेज लोगों को ना बुद्धि थोड़ी कम होती है, इतनी अच्छी बुद्धि नहीं होती. दे कांट लुक इन डीप इनटू लाइफ, सो दे डोंट हैव द रिक्वायर्ड वोकैबुलरी फॉर दैट. उनके पास में वो शब्दकोश नहीं है. तो जब आप लाइफ को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू डिस्क्राइब लाइफ और ड्वेल मोर इनटू व्हाट यू कॉल एज लाइफ, देन वी नीड आवर वोकैबुलरी. हमारी भाषीय परंपरा जो है ना, वो इसी से बनी हुई है. सो in many ways it's very technical, but if you become too technical, you lose the joy of life, isn't it? ज्यादा टेक्निकल, ज्यादा ज्ञान लेने के बाद में होता क्या है, योर लाइफ बिकम्स लाइक डल, डेड. सो
देयर इज अ टेक्निकलिटी टू इट. थोड़ा टेक्निकलिटी भी बात करेंगे, थोड़ा अदरवाइज भी बात करेंगे. कुछ कुछ मैं बीच में अपना ज्ञान झाड़ दूंगा ताकि आपको लगे कि हाँ मालूम है इस बंदे को. But it is not about that. So many people chose not to speak in this culture, because the moment you speak, you are trying to express something unexpressible. जिसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो आप बड़े आयाम को भी छोटा बना देते हैं. So that is why many people chose not to speak, but many were compelled to speak. कई लोगों को जबरदस्ती बुलवाया गया. So they spoke, they chose one door. एक दरवाजा खोला उन्होंने और लोगों को बताया, but that is not the only door. हाँ, वो अकेला ही वो डोर नहीं है, और भी डोर्स हैं. So in the process of what we call as evolution of human being, at least everybody should understand, सभी को ये समझना चाहिए कि why you living, आप जिंदा हो क्यों? कुछ मालूम है उसके बारे में? आप जिंदा हो क्यों? सारी कहानी तो यहीं से शुरू होती है. एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. नहीं, आप जिंदा हो क्यों? कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं. डोंट हैव टू रीड एनी बुक. यू आर लिविंग एंटिटी, इजंट इट? आप जीवन तो हो कि नहीं? आप सवाल अपने आप से करो ना, व्हाई यू आर अलाइव? आप जिंदा हो क्यों? यू वांट टू एक्सपीरियंस लाइफ, इजंट इट? टू सफर? ये किसने बताया? विशाल सिंह, ये किसने बताया? ये कौन सी किताब पढ़ के आए हो? इनमें से यहां पर कितने लोग हैं who wants to suffer? Nobody wants to suffer. So you are not here to suffer. Obviously anything but suffering. कुछ भी हो, बेशक से आप चाय पीना है मगर सफरिंग नहीं चाहिए. So anything but suffering. So आप जिंदा हो क्यों? क्योंकि आप किताब पढ़ रहे हो. That is why you are talking like this. आप अलग अलग किताबें पढ़ते हो. You are talking like this. कर्मों का, what is कर्म? आपको क्या मालूम कर्म क्या होता है? Somebody has said, किसी ने बोल दिया आपको. लेकिन सभी आप जानते हैं, every one of you know why you are here. The only problem is you are not looking there. That's it. आप वहां देख नहीं रहे. सबको आपको मालूम है. मैं हमेशा कहता हूं, you are all wise people, and that too Indians. Brown is human. Other color we don't know. So as an Indian, you are intelligent species. आप ही मानव हैं, बाकी तो आपके अपभ्रंश हैं. जो आपसे निकल के नॉर्थ चला गया वो सफेद हो गया, जो साउथ चला गया वो काला हो गया. तो आप तो स्टैंडर्ड हो. आप तो स्टैंडर्ड हो. जीवन तो भारत में ही हो. पैदाइश इसकी भारत की. तो एज एन इंडियन यू आर इंटेलिजेंट स्पीशीज. द प्रॉब्लम इज somebody has educated you. किसी ने आपको पढ़ा लिखा दिया. So why you are alive? You want to experience life, isn't it? सबके लिए एक ही तरीके से. Do you want to experience life? You want to experience life. और कोई रीजन है? कोई रीजन नहीं. Why do you want a bank balance? Because through a bank balance you can buy some experience. उससे आप अनुभव ही तो खरीदेंगे ना, एक्सपीरियंस ही तो खरीदेंगे. नोट थोड़ी खाओगे.
So you want experience of life, चाहे वो किसी तरीके का हो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंच तन्मात्राएं हैं, इनमें से कुछ भी आप, 5 सेंसेस है ना, आप तो एक्सपीरियंस ही करना चाहते हैं। बीमारी से क्यों भाग रहे हैं? लेट द डिजीज रिमेन इन योर बॉडी। क्या प्रॉब्लम है बीमारी से निकलने? व्हाई डू यू वांट टू कम आउट ऑफ डिजीज? Why do you want to come out of disease? But because disease is not a good experience. Yes or no? आपको अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए ना? You want a good experience of life. एक टक जवाब यही होना चाहिए। Why you are alive? Because we want good experience of life. We are here to experience life. पर बातें कैसे करेंगे? बातें भी उल्टा करते हैं हम सब। नहीं नहीं, थोड़ा चाहिए, चलेगा, ज्यादा नहीं चाहिए। अरे बाबा, एक्सपीरियंस चाहिए तो ज्यादा लो ना, अदरवाइज योर लाइफ विल नॉट बी फुलफिल्ड। अगर अनुभव नहीं करेंगे जीवन में, तो जीवन पूर्णता की तरफ में नहीं जाएगा। तो जीवन को अनुभव करना बहुत जरूरी है। कैसे अनुभव करना? कैसा अनुभव करना? मैक्सिमम, मैक्सिमम। तो क्या आप मैक्सिमम एक्सपीरियंस कर रहे हैं? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आप मैक्सिमम एक्सपीरियंस कर सकते हैं? यस, अभी कर सकते हैं, अभी खुश हो सकते हैं थोड़ा। कैन यू फील अ लिटिल हैप्पी इनसाइड? थोड़ा खुश हो सकते हैं। क्या थोड़ा ज्यादा खुश हो सकते हैं? कितना खुश हो सकते हैं? इतना कि खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन क्यों नहीं हो रहे? Who is stopping you? Nobody is stopping you. You are stopping yourself. Who is stopping you? भूकंप आ रहा है तो क्या आप खुश हो सकते हैं? हो सकते हैं। भूकंप में आप क्या कर लोगे ये बताओ ना। मृत्यु आ रही है, आप खुश हो सकते हैं? 100%। यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। हाँ, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। हार्ट बीट आप करवा रहे हैं? नो। लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, कुछ भी नहीं करवा रहे। एक ही चीज तो हाथ में है, वो भी नहीं कर रहे, खुश होना। To be happy is in your hand. Nothing is in your hand. कुछ भी नहीं है आपके हाथ में। नहीं, मेरी सासू मां मुझे बहुत प्यार करने चाहिए। क्या इम्पॉसिबल चीजें सोच रहे हो? क्यों अपने सिर पर डंडा मार रहे हो? मेरी बहू अच्छी होनी चाहिए। क्या बात कर रहे हो? मेरे बच्चे मेरी बात माने? नेवर। क्या बातें सोच रहे हो? यू कैन डू एनी अदर थिंग इन लाइफ। हवा मेरे हिसाब से चलनी चाहिए? नेवर। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। बारिश मेरे हिसाब से होना चाहिए? कभी नहीं होने वाला। आपके हाथ में क्या है? टू बी अ लिटिल हैप्पी। अब आप कहते हैं जीवन को अच्छे से अनुभव करने के लिए आए हैं, वो भी तो नहीं कर रहे हैं। एंड दैट इज इन योर हैंड। वही तो इकलौती चीज आपके हाथ में है। और तो कुछ भी हाथ में नहीं। सो अनुभव करना। अनुभव करने के बाद में दो चीज और जुड़ जाती है। देयर आर टू मोर थिंग्स टू एक्सपीरियंस। यू शुड बी देयर, इजंट इट? आपको होना पड़ेगा। सो गए तो एक्सपीरियंस नहीं होता। यस और नो? इफ यू स्लीप ऑफ, देयर इज नो एक्सपीरियंस। अच्छा, छोटी नींद सोए तो भी एक्सपीरियंस नहीं होता। थोड़ी बड़ी नींद सोते तो भी एक्सपीरियंस होता। बहुत बड़ी नींद सोते हैं तो भी एक्सपीरियंस नहीं होता। सो एवरीथिंग इज स्लीप फॉर यू। व्हेन यू डाई, इट इज नॉट डेथ, इट इज स्लीप। थोड़ा लंबा है। यू डोंट नो व्हाट इज डेथ। डेथ किसी को मालूम ही नहीं, बट एवरीबॉडी थिंक्स अबाउट डेथ। तो आपके लिए तो वो एक्सपीरियंस होना बंद हो जाएगा। व्हाट इज दैट? व्हेन द एक्सपीरियंस विल स्टॉप। आप सो जाते हैं, व्हेन यू स्लीप ऑफ,
your experience stops. It's a death. Death ही तो है वो. So what should be your idea about lifestyle? कि I should sleep less, experience more. यही होना चाहिए ना. You can't avoid death. So whatever opportunity you have, just go for experience. Higher, higher, higher. और ज्यादा अनुभव हो, और अच्छा अनुभव हो, और अच्छा अनुभव हो. ऐसा होना चाहिए ना कुछ लाइफस्टाइल. So what you want to experience? You experience everything in this world. दुनिया में हर चीज का अनुभव आप करना चाहते हैं. You want to taste something. किसी चीज का स्वाद लेना चाहते हैं. You want to smell something. You want to touch something. ये पंच तन्मात्रा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध. आप यही अनुभव करना चाहते हैं. That means there is something else apart from you which you want to experience. Yes. तो पहली चीज क्या आ गई? मैं होना चाहिए, I होना चाहिए. You should be alive. The second thing is there should be some object to experience. तो तीन चीजें बन गई ना. You, आप, ऑब्जेक्ट जिसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस इटसेल्फ. तीन चीज बन गई ना. सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड एक्सपीरियंस. तीन चीज बन गई. यही जीवन है. इसी को हम कहते हैं त्रिका. फंडामेंटल ऑफ लाइफ, त्रिका. क्या इसको आप तभी जानेंगे जब किसी किताब में पढ़ेंगे? नो, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग. आप तो यही कर रहे हैं. पूरी जिंदगी यही कर रहे हैं. यू एक्सपीरियंस एन ऑब्जेक्ट दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग. तीन चीज कर रहे हैं ना आप. सो तीन चीज कर रहे हैं. इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे बोलते हैं? हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस? What you are fundamentally, we term that dimension as Shiva. Shiva. Experience is called as Shakti. And everything, every object is called as Anu or Jagat or Nara. आप इसे कैसे भी बोल सकते हैं. शब्दकोश कोई भी ले लीजिए. But Anu is a appropriate word for it. ये हजारों साल पहले हमारे बाप दादाओं ने ऐसे देखा लाइफ को. What you call as ऋषिस, मुनीस, योगीस, सिद्ध, वो हमारे बाप दादा थे. उनको ऐसे नहीं सोचना वो दूसरे परग्रही थे. They didn't come from another planet. वो हमारे ही, हम उन्हीं के lineage में. वो हमारे देवर, our historical father and mother. तो उन्होंने कहा कि भाई they wanted to actually know the fundamentals of life. जीवन के मूलभूत आधार को समझना चाहते थे. So today through that I will get you to 3 basic disease in human life and how to come out of it. ठीक है. इसी से होते 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 3 fundamental disease of life. त्रिका. आज हम त्रिका के ऊपर बात करें. आज हम त्रिका के ऊपर बात कर रहे हैं. त्रिका के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इट इज द फंडामेंटल. सो आई एम पुशिंग यू टुवर्ड्स महाशिवरात्रि. I am just pushing you towards Mahashivratri. I will not be available on Mahashivratri, so I'm just pushing you. यहां से धक्का दे देता हूं, देखते हैं कहां तक आप जाते हैं. So what you can see is called as Anu, और अणु के बेसिस पे जो चीज बनी है that we call as
जगत, उसको हम जगत कहते हैं। सो जगत, यू एंड एक्सपीरियंस। अब देखिए, आप जगत देखते हैं, द कनेक्टिंग फैक्टर यू डोंट सी। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, हर चीज एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई। यू ऑल्सो एक्सपीरियंस इट, बट यू कांट सी इट। आप देख नहीं सकते। यू कांट सी एक्सपीरियंस, अनुभव को आप देख नहीं सकते। सो यू कांट सी द कनेक्टिंग फैक्टर, यू कैन ओनली सी द डिफरेंशिएटेड वर्ल्ड। दुनिया की भिन्नता को आप देख पाते हैं, मगर उसके भेद को नहीं देख पाते हैं। दीज आर टू वर्ड्स, भिन्नता एंड भेद। भेद मीन्स व्हाट? भेद का मतलब क्या होता है? एक्चुअली में हमारे शब्दों को बड़ा डिस्टॉर्ट किया गया, तो आप अभी जो भी समझते हो गलत समझते हैं। भेद का मतलब होता है जो जोड़ता है, जिससे आपको अनुभव होता है, उसे भेद कहते हैं। सो भेद फंडामेंटल्स है, हाउ टू एक्सपीरियंस समथिंग। सो आई वुड से, आप लोग कुंभक कर रहे हैं, कुंभक भेद है। इट्स अ मेथड टू एक्सपीरियंस एनीथिंग। कई चीजें भेद के रूप में हम जानते हैं। भेद मीन्स विथ थ्रू विच यू कैन नो और एक्सपीरियंस। जानना ही तो भेद होता है। हाँ, जो चीज नॉर्मली आपको नहीं मालूम है, आप फिर कहेंगे ओह इसका भेद जानो, बिकॉज नॉर्मली इट इज नॉट अवेलेबल। सो भेद और भिन्नता, ये दो अलग अलग चीजें हैं। भिन्नता इज लाइक डिफरेंशिएशन, भेद इज इंटीग्रेशन। तो जो चीज हर एक को कनेक्ट कर रही है, आप उसको नहीं देख पाते, आप केवल भिन्नता को देख पा रहे हैं, आप भेद को नहीं देख पा रहे। मगर आप इसे समझ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस इट, यू कैन अंडरस्टैंड इट ऑल्सो, यू कैन एक्सपीरियंस इट ऑल्सो। सो what are you trying to experience? Of course, भिन्नता, हर चीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, मगर एक्सपीरियंस करने के बाद क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। जब तक आपको कोई चीज नहीं एक्सपीरियंस करने को मिलती है, तब तक तड़प होती है। द मोमेंट यू एक्सपीरियंस, द एंथुसियाज्म गोज डाउन, है ना? शादी नहीं हुआ तो शादी करने की जल्दी, शादी होने के बाद में सब क्रैश हो गया ना। तो लैला मजनू, शीरी फरहाद, थर्ड लाइफ टाइम में शादी हो गई उन दोनों की। Now nobody knows about that lifetime. So once you experience bhinnata, your enthusiasm goes down because you still do not feel complete. आपके जीवन का रहस्य है, रहस्य नहीं है, सब जानते हैं। आई एम जस्ट लुकिंग देयर एंड टेलिंग यू, मैं वहां देख के केवल आपको बता रहा हूं। तो भिन्नता को जब आप एक्सपीरियंस करते हैं तो यू डू नॉट गेट फुलफिल्ड, दिस एवरी वन ऑफ यू नो। आपने जीवन में बहुत कुछ पाया होगा, मगर उसका इंतजाम खत्म हो चुका है, isn't it? So भिन्नता को अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे तो इट डजंट मेक यू कंप्लीट, तड़प फिर भी बाकी रहेगी। देन व्हाट डू यू वांट टू एक्सपीरियंस? आप भेद को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बट यू डोंट नो दैट, आप जानते ही नहीं इसको। So you feel incomplete because you only think about भिन्नता, you only think about the world, but you don't know what is the connecting factor of this world. अनुभव में थोड़ा आता है, जब एक मां के गर्भ से एक शिशु बाहर निकल जाता है तो वो तड़प हो जाती है निकल जाने की, और कहीं ना कहीं लगाव, somewhere you feel connected, isn't it? A mother feels connected with the child.
you experience that connecting factor, and that only fulfills you, isn't it? What fulfills you? The bheda, the connecting factor. If you experience that, that fulfills you. Why? A female is pretty fulfilled, a male is not fulfilled. So male do all the gymnastics in the world, isn't it? The male wants to get the fulfillment. उसको साइंस में खोज करनी है, उसको दूसरी जगह पे जाके खोज करना, उसको रूल करना है. Male wants to do so many things in the world. Why? Because fundamentally he is not fulfilled. Whereas nature gives mother an opportunity to get fulfilled. और इसलिए फीमेल जब मेल को देखती है सोचती है ये क्या जिम्नास्टिक कर रहा है. हम तो गप्पे मार के खुश हो जाते हैं. नहीं, ये आदमी इतना परेशान क्यों है? But fundamentally, both of them are trying to experience the indivisibility of existence. पूर्णता को अनुभव करना चाहते हैं. The connecting factor. तो त्रिका के बारे में अगर हम बात करें, इसी को हम कहते हैं शिव, the fundamental factor who wants to experience, Shakti, the experience, and the world, Anu. ये त्रिका है. शक्ति के बारे में बात करें, if you talk about Shakti, the experience, you have something called as Ichha Shakti, Jnana Shakti, and Kriya Shakti. You know something, you want something, you know that, and you go towards experiencing it. इच्छा शक्ति, आपका जन्म क्यों हो गया? क्योंकि आपको अनुभव करने की इच्छा थी. You wanted to experience the world. हमारे देश में कहते हैं ना, देवताओं को भी even if God wants to experience, they have to come in human life, human form. मानव शरीर में आना पड़ेगा अगर उसको अनुभव करना है संसार को. तो देवता भी अनुभव नहीं करते. It is only a prerogative of human beings that they can experience life from its beginning to its ultimate. So Ichha Shakti, Jnana Shakti, the moment we say Jnana, Jnana fundamentally is experience. आप किस चीज को अनुभव करते हैं? जो चीज आप जानते हैं उसी को अनुभव करते हैं. अब देखिए यहां पे मैं एक कैच डाल रहा हूं, अगर आप समझ जाओ तो समझ जाओ. So what happened when Columbus went to America? He wanted to discover India. Columbus तो इंडिया आ रहा था, वो अमेरिका पहुंच गया. He went to America. He thought this is it. He reached the right destination. आज भी वहां के लोगों को क्या कहते हैं? They call them Red Indians. So Columbus went with ship. वो जो ship लेके गया था, now the ship was not in the imagination of the locals, जो वहां के Red Indians, what we call them Red Indians, जो लोकल थे, उनके इमेजिनेशन में भी शिप, there was no ship in their imagination. So he writes in his biography that they couldn't see the ship. वो शिप वहीं खड़ा था पर उसे वो देख नहीं पा रहा था. So if you understand or if you know a little about human psyche, human experiences only those things which is embedded in them. जो उनके अनुभव में चीज होती है उसी का अनुभव करते हैं in different ways. So there is a catch here. तो आप अनुभव क्या कर रहे हैं जीवन में? वही जिसका अनुभव आपको पहले से ही है.
इसी को दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द साइकिल ऑफ लाइफ। आप अपने पूछ को ही पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट आर यू ट्राइंग टू एक्सपीरियंस? यू आर ट्राइंग टू एक्सपीरियंस व्हाट इज देयर इन योर एक्सपीरियंस। जो बहुत बड़ा कैच है, दिस इज कॉल्ड एज माया। इसको माया कहा जाता है। यू वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग which is already there in your experience. Now I give an example. यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, और मैंने ये एग्जाम्पल बहुत बार दिया हुआ है। The tastiest fruit in the world is called as kakruba. It happens or it grows in a certain region of Nigeria. And that plant gives fruit once in 12 years. ठीक है, सबसे टेस्टी फ्रूट क्या है? ककरूबा। नाइजीरिया के एक पर्टिकुलर इलाके में होता है, और वो फल 12 साल में एक बार होता है। What did you experience when I said this? जब मैंने ये बोला, आपको क्या अनुभव हुआ? क्यूरियोसिटी बढ़ गई ना? एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं हुआ। Now, if I tell you to cut a lemon, एक नींबू को काट लीजिए, एंड पिक इट अप, उसे उठाइए और squeeze it in your mouth. What did you experience? Everybody would have experienced the same thing. ककरूबा में किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया, नींबू में सबने एक्सपीरियंस किया। But you will ask this question, oh, how is the experience of kakaruba? There is no such fruit. ऐसा फ्रूट होता ही नहीं है कोई। I have just described it for the sake of saying something. लेकिन नींबू को आपने एक्सपीरियंस किया क्योंकि वो पहले से अनुभव में था। You can experience only those things which is there in your experience. You can't experience anything which is not in your experience. कितना बड़ा कैच है। This is called as Maya. तो क्वेश्चन तो सवाल तो ये भी हो सकता है ना, what are you trying to experience? Whatever is there in your already there in your experience. So why you are trying to experience the same thing again and again? This is just like catching your own tail. This is just like catching your own tail. वो कभी भी आप वो खत्म नहीं होगा. And that is why this is called as samsara. It just goes round, 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 round. So when what state you experience, आप कौन सी स्थिति को experience करते हैं? Again 3, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति. जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 स्टेट में आप रहते हैं. You stay in these 3 states only. त्रिका, I'm just talking about त्रिका, 3, 3, 3. अभी देखना कितने 3 आएंगे. So there is a word called vidya. विद्या आपने सुना हुआ? What does vidya mean? विद्या का मतलब क्या होता है? विद्या का मतलब होता है the possibility of experience. What is Veda? The experience that can be described is Veda. What is Vidyarthi? Somebody who wants to experience is Vidyarthi. What is Vedana? Ved जानते हैं ना? वेद तो अभी बोला. That can be described. What is Vedana? Something that you can't experience is Vedana. What is Vedana? It is pain. दर्द क्या है?
जो आप अनुभव जिसके बारे में आप नहीं जानते, that creates pain. So pain can happen on 3 levels: Adi, Bhautik, Adi, Daivik, Adhyatmik. So pain doesn't happen just on your physical level. When your body doesn't know why something is happening, it creates pain. आपका शरीर कब दर्द क्रिएट करता है? जब इसको मालूम नहीं कि क्या चीज हो रही है, उसको करेक्ट नहीं कर सकता, मतलब बॉडी इज नॉट एबल टू करेक्ट समथिंग, then it creates pain. When you don't know how to deal with the world, how to become successful in life, how to succeed in your relationship, how to succeed in the society, that pain, it pains. That pain is called as Adi Daivik pain. And if you can't experience the entirety of existence, that is called as Adhyatmic pain. तो आप बाकी कोई भी पेन हटा लो, if you can even remove every other pain in your life, you can't remove Adhyatmic pain. So howsoever you become successful, you will not be satisfied. यही होता है ना? This is what happens. Howsoever a person is successful, person is not satisfied because he is not able to address Adhyatmic pain or Shula. So just think about how intelligently we placed words. If you just understand words, you will understand life. So when you are not able to experience something, either that is not truth, that is not the entire truth, or you are not awake. So when you are only Jagrat, then you can get to what you call as the completeness of life. So Jagrat, if it heightens up, it is called as, it can liberate you. It is called as enlightenment. The height of your Jagrati is enlightenment. And only your Jagrati can help you experience everything, even the connecting factor, even the Bheda. So that is why you would have seen yogis do everything to be more alive. To be more alive. वो एक हाथ खड़ा करके रखा हुआ है. You go to Kumbh Mela, you'll see this. One person lift one hand and never gets it down. वो नीचे ही नहीं लेके आता. You lift one hand and try to sleep, you'll not be able to sleep. So they are trying to be more Jagrata. They'll eat less. If you eat less, will you be dull or more active? You'll not be able to sleep. रात को भोजन ना करें, नींद नहीं आएगी. So Jagrata. The first thing to achieve is more aliveness. How do you express yourself? आप express कैसे करते हैं? विद्या के बारे में बात कर रहे थे हम. विद्या experience, the possibility of experience is called as Vidya. So Vidya can be described in 3 categories. The first one is subject, pramatra, pramana, prameya. Subject, means of knowledge, object. Pramatra, pramana, prameya. Now, when you express yourself, जब आप express करते हैं, so in how many ways you express yourself? Pashyanti, madhyama, vaikhari. Even if you sit quiet, mind doesn't stop. Your life is expressing itself in some way or the other.
उसको वैखरी कहते हैं. Without even speaking, without even you speaking in your mind, your life is expressing. It's going on. That is called as vaikhari. Madhyama, when you speak in your mind, that is madhyama. That is also how you express yourself. Sorry, vaikhari means when you say something. Pashyanti means when you are not saying in your mind also, but you are expressing, your life is expressing. It's just vomiting it out. So Pashyanti, Madhyama, Vaikhari. If you know how to handle Pashyanti, then you will know the connecting factor. Then there is called as Prakasha. Then Vidya will happen in your life. Usko Prakash कहते हैं. Prakash is not light. Prakash means when you are able to experience the entirety of everything. That is called as Prakasha. Enlightenment is called as Prakash. और इसको प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाते हैं. We also say Prakash Parva. That means at that day, that human experienced everything. Prakasha, Vimarsha, Samarasya. Vimarsh, when you are still, you have not experienced the entirely everything, but you are on the path. जब आप you are going in that direction, that is called as vimarsh. तो आमतौर पे विमर्श कहते हैं ना, डिबेट. We call vimarsh as debate. Vimarsh is not debate. Vimarsh is when you are able to see things clearly. Through debate also, maybe your mind might get a little clear. But when it is not clear, it is samarasya. When you can only see the anu, the physicality of life, not the connecting factor. But the connecting factor is pervading everything. When the connecting factor is pervading everything, but you are not able to experience, that state is samarasya. आप भेद नहीं कर पा रहे उसको. 3 और भी आ जाते हैं. इसको और भी तरीके से बोल सकते हैं. पति, पाश, पशु. When you are entangled, that is pashu. Entangled in what? In experience, which is not complete. And when you experience what is complete, you become pati. You also have pashu, patinath in Nepal. What does pashu, patinath do? It will help you to experience what is all pervading. From pashu, you can become pati. Who knows? Who is pati? Who knows? Pasha is when you are entangled. तो इतने त्रिका पे हम बात कर रहे हैं. And also you'll see, even if you see Ayurveda, Vata, Pitta, Kapha, Ojas, Tejas, Varchas, भाव राग ताल, भारत. त्रिका. What is Bharat? Bhav, Rag, Tal. Rhythm, balance, strength. Trika. Now, let's come to the main aspect of what we wanted to speak about. So there are 3 basic, when you live, the way you live, you create 3 impurities in your life. The way you live, because you are not in tune with the entirety. So you live as an individual, you create 3 impurities. So the first impurity is called as Anva Mala. The second impurity is Maya Mala. And the third impurity is Karma
mala. So these are three impurities that you create in the body, in the mind, through your action. So when you say anva mala, that gets created, or physical impurity, toxins in your body, it gets created because you are entangled into something called as maya mala. Maya mal gives rise to impurity in the body or toxins in the body, and the maya mala gets created through karma mala. So if you start elevating the karma mala, actional impurity, impurity that gets created through action, if you start taking care of that, slowly the maya mala will wither off, and you will see even the anva mala will wither off. So this is how we created a lifestyle in India. भारतीय सभ्यता में इसी को देखते हुए एक लाइफस्टाइल क्रिएट की गई थी. नाउ विल टॉक अबाउट दैट. विल टॉक अबाउट दिस एस्पेक्ट. इसके बारे में थोड़ा बात करें, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट डिजीज इन अ डिफरेंट मैनर in the programs, in the webinars that we conduct. We talk about disease in a completely different manner. But here we are talking about disease in a completely different manner. But these are the fundamentals of life. बाहरी तौर पे आप उसको देखेंगे तो you will not be able to correct the fundamentals. Even if you come out of disease, you will not be healthy. So to really get health of what you call as life, जीवन की अगर जीवन का स्वास्थ्य लाना है, then you have to look at these three aspects. So anva mala, anva comes from anu. Anu means the world. The world. So when you just try to experience the world, as I said, you don't feel complete. That incompletion creates anva mala. Now let us talk about practical implication of these things. When you have food, when you eat food, if you do not feel satisfied with that food will create toxins in your body. Okay? If you do not get satisfied with what you eat, that food will create toxins in your body. So it is not just about food. If you can't experience the other person fully, it will create relationship toxins in your life. अगर आप दूसरे इंसान को पूरे तरीके से अनुभव नहीं कर पाए तो वो रिलेशनशिप की, संबंध का टॉक्सिन क्रिएट करेगा. So it happens on every level, all the 5 levels. रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श. अगर आप ठीक से बोल नहीं पाते तो आपके बोलने की अच्छे से जो इच्छा है वो अधूरी रह जाएगी और आप जबरदस्ती दूसरों को परेशान करेंगे बोल बोल के. नहीं. When you are not satisfied in any form, in any aspect of life,
it will create toxin. So the first thing that we need to understand is how to conduct our life. चाय पिएंगे तो कैसे पीना है, बात करेंगे तो कैसे करना है. आजकल तो हमारे इंडिया में ये इलॉजिकल लॉजिक भी चल रहा है ना. व्हाट इलॉजिकल लॉजिक? क्या इलॉजिकल लॉजिक है? खड़े होके खाना मत खाओ, बैठ के खाओ. पर बैठ के खाने से ना उतना ही खाया जाता है जितना कि पेट दबता है थोड़ा तो कम खाओगे. दिस इज इलॉजिकल लॉजिक. What is the right logic? When you sit down, you can enjoy the taste and you can complete the satisfaction of having food. जब आप स्थिर हो जाते हैं तब आप अनुभव अच्छे से कर पाते हैं. So do not do any work in an unbalanced state. Always do things in a balanced state, stable state. स्थिर रह के करना चाहिए. भोजन कैसे करें? पहले तो अपने आप को स्थिर करो. स्टेबलाइज योरसेल्फ. बातें कैसे करना है? एक दूसरे से सिट डाउन, बैठ के बात करो ना इत्मीनान से. सैटिस्फाई योर वांट ऑफ टॉकिंग. बात करने की इच्छा को पूरा करो ना. आसन कैसे करना? योगा नाउ वेरी मार्केटेड थिंग इन द वर्ल्ड. हाउ टू डू एन आसन इन अ वेरी स्टेबल स्टेट. Sthiram Sukham Asana. That's why Patanjali said one definition of asana. Sthiram Sukham Asanam. What Patanjali is talking about? He's not talking about इस पे weight इतना डालो, इस पे weight इतना डालो. Don't even weight. He's not talking about even weight. He's talking about the satisfaction of experience. Now, if you don't translate Patanjali in right manner, you'll create a lot of perverted beings. All the yoga practitioners, you look at them. Because you're not even translating things properly. तो मूलभूत नियम आ गया हमारे पास में. Why we sit the way we sit. अब पता चला अभी आपको हम जो बैठते हैं वैसा क्यों बैठते हैं. Because this is science. What I am talking about is the science of life. तब आपका अणव मल कम क्रिएट होगा. Because you hold a body, body creates toxin. How to reduce the toxin formation in the body? You eat whatever the body desires. आप वो खाएं जो आपके शरीर की इच्छा होती है. But not human creation, nature's creation. Because your body is nature's entity, nature's produce. आपका शरीर तो प्रकृति ने पैदा किया. तो आपको खाना क्या है? जो आपके शरीर की इच्छा होती है. Only then it will get satisfied. This much carbohydrate, this much fat, this much protein, you will create more disease, more toxins in your body. Yes or no? आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? मैं बोल रहा हूं what you call as science is not science. It is even worse than superstition. वो सुपरस्टिशन से भी गई गुजरी चीज है. सुपरस्टिशन में आपको सांत्वना तो हो जाती है कम से कम. So Anvamala, how you ensure that you do not create Anvamala? Because you are holding this body. This body creates toxin. How to minimize that? When you hate someone, you create more toxin. Yes or no? So हमने क्या बोला? वसुधैव कुटुंबकम. पूरा संसार, everyone is your family in the world. What were we trying to achieve? Peace? No, bullshit. Peace is a bullshit word.
What did we want to achieve? Less anvamala. शरीर में बीमारी नहीं हो आपको. So vasudhaiva kutumbakam. The second one is maya mala. What is maya? What is maya? Whatever you think is right may not be right. So what is maya mala? Come out of differentiating the world. दुनिया को बांटने से बाहर निकलिए. This is right, this is wrong. You have got entrapped. There is nothing right, nothing wrong. Can it give you fullness of experience? That is the only thing. क्या वो आपको अनुभव की पूर्णता देगा? रसगुल्ला खा के क्या करोगे? फिर से भूख लग जाएगी, फिर से खाने की इच्छा होगी, फिर भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देगा. नहीं, I should be married and then I should have a baby boy and a baby girl and I'll be satisfied. कितने लोग satisfied? What you think will satisfy you will never, has not satisfied you. At least come to this understanding. Experiencing the world will not give the entirety of experience, will not fetch you the entirety of experience. दुनिया को अनुभव करने से आपको पूर्ण अनुभव नहीं होगा. अविद्या से बाहर निकलिए. What is avidya? What is vidya? Possibility of experience. What is avidya? No possibility of experience. What experience? Entirety, experiencing the entirety. So the second mala is the rat race of the world. नहीं, मुझे तो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है. उसकी लाइफ खराब हो जाएगी उसको कुछ बनाओगे तो. So maya mala, you think something is right because there is a social psychology which has been created. You think high sugar level is a problem because there is a social psychology created. It is not a problem. And your whole life is about maintaining the sugar level. तो किसी ने आपको टारगेट दे दिया, गड्ढा खोदो भरो, गड्ढा खोदो भरो. वो कहता है कभी काम खत्म नहीं होने वाला. And you are doing that, isn't it? Every day you're popping in a pill, testing your blood sugar level. कुछ नहीं होने वाला, मरने वाले तो मर ही रहे, जल्दी मर रहे हैं दवाई खाते. So माया मल, एक आइडिया क्रिएट कर लिया अपने लाइफ में. If you create ideas about life, you are going to get entrapped in that. और ये आपके दिमाग को शांत नहीं होने देगा. How many people facing mental issues or something related to mind, some problem related to mind? Everyone, 100%. Why is that so drastic in the world today? Every day I get a question, oh इसके बारे में थोड़ा ज्ञान बताओ. ज्ञान बता बता के पागल हो रहे हैं लोग, सीख सीख के. I would rather say, if you have a kid at home, just play with that kid. थोड़ा खेल लो उसके साथ में, बड़ा मजा आएगा. You have gone to school and then to university, college. How much experience your education created in your life? Rather, it destroyed the possibility of experience. आज एक 12 साल का बच्चा डिप्रेस हो रहा है because
He is getting every damn information on the screen. But he has not experienced life at all. उसके जीवन में एक्सपीरियंस की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई. So much information. Your life will not get satisfied with information. Rather, it will get more and more dissatisfied. Your life will only get satisfied through experience. And we are even removing the possibility of experience. Today, I have seen, because we run a fertility program, people don't want to get intimate. वो आपस में शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करना चाहते. Because they have got that experience on the screen. उनको लगता है वही सच है. एक सुंदर एक्सपीरियंस को भी परवर्ट बना दिया हमने. No doubt, perversion, mental perversion will happen in the world. है. उम्र दराज लोग सबसे ज्यादा पॉर्न देख रहे हैं. They are not satisfied. Understand? They are not satisfied. जीवन अनुभव करना चाहता है. They are born to get satisfied and they are not getting satisfied. Education is alleviating even the possibility of experience in life. जो फलों का स्वाद आपको आता था आज नहीं आता. जो तरकारियों का स्वाद आता था आज नहीं आता. By genetic modification, we have reduced the possibility of experience drastically. पूरी humanity बर्बाद हो जाएगी. पूरी humanity बर्बाद हो जाएगी because you are not even experience simple food the way you need to experience it. जो भिंडी का स्वाद आता है वो आना चाहिए ना. आलू का भी तो स्वाद होता था. आजकल तो आलू का स्वाद ही नहीं होता कोई. When my grandmother used to make आलू की सब्जी, from outside the house it will smell. आलू की सब्जी बनी. आज आप देख लो, वहां जाके अगर सूंघोगे तब भी नहीं आएगा. It will only smell masala. You will be able to smell masala only, not aloo. And we are putting every damn masala in the kadai for making it tasty. Yes or no? Food doesn't need masalas for creating taste. They have their own taste. आज तो आपको सारे मसाले डालने पड़ते हैं तब जाके आप कहते हो कि चलो खाने लायक तो हुआ. What have we done? क्या किया हमने? Genetic modify, GM crop, genetic modification. We are destroying the possibility of human experience. And every human being will be dissatisfied and deranged in the years to come. It is a criminal thing to do. For the food security, if you are doing GM crop, that means it's a criminal on the land, a criminal act on the land, on the whole humanity. Maya mal kitna create hoga when you are not satisfied just by a simple food. Just by simple food, if you can't satisfy your life, why you are living? If you can't be intimate with someone, why are we living? Maya mal. This is avidya. अविद्या पढ़े लिखे से इसका कोई मतलब नहीं है. When there is, you create a situation where there is the possibility of experience goes down, it is avidya. And the third part, and then गर्भाधान वालों को कुछ
बताना है. Third part, I'll just brief it a little. Karma mal. So anva mal, maya mal, karma mal. Through anva mal, we are creating physical disease. Through maya mal, we are creating mental disease. और कर्म मल तो बताए ही नहीं. This is the starting point of disease. All disease. Karma mala. So I said there are three basic entities, Trika, and they are combined and they are one into each other. Shiva, Shakti, Anu. I also called Anu as Kumbhak because Anu can make effort, and effort making mechanism is Kumbhak. So I also called Anu as Kumbhak. And Kumbhak goes into a different dimensions when it becomes Shakti, and then it goes to an ultimate dimension that is called as Shiva. So they are just a manifestation of, or what you call as a drop down from Shiva. You say it's Kumbhak in different levels. Karma mala. Now, karma mala, ये बड़ा important part. This is the first step. When you do action, thinking that you are doing it for your experience only, then it creates karma mala. दोबारा से समझिए, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है. So I'll make you understand it also. इसको समझाऊंगा भी. When you do an action, thinking that you are the doer of action and you are doing it for yourself, then it creates karma mala. जब आप कोई काम करते हैं और ये सोचते हैं मैं कर रहा हूं और मैं अपने लिए कर रहा हूं, तो वो कर्म मल क्रिएट करता है, कर्म टॉक्सिन. So इसको कैसे समझते हैं? In India, you would see people into spirituality. When they start a discourse, they would always start it with, I am not the doer. So I am doing it on the behalf of Shiva or whosoever Ishta he has. वो लाइफ के कोर को पहले एड्रेस करते हैं. अच्छा, so I'll tell you a very interesting thing. Can you write down a thesis of bhakti? Bhakti means emotion. Bhakti is related to emotion. Can you write down emotion? How to create emotion, how to take it to its peak? Can you write it down? No. Very, very, very difficult to write it down. Almost impossible. Only one person could do that. Only one person could do that. And who that person is? And what is that compilation? It is called as Narad Bhakti Sutra. Only one person could do that. His name is Narad. Because, you know, when we talk about certain life forms, they are not physical in nature, but they are like forces which creates action in physicality. जब देवी देवता हम बोलते हैं, तो देवी देवता फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, बट वो शक्ति फॉर्म में होते हैं जिससे फिजिकलिटी काम करती है. नारद इज लाइक योर माइंड. द कॉम्प्लेक्स माइंड इमोशन कॉम्प्लेक्स को नारद कहते हैं. So from the emotion it has to bring something into mental dimension. He created something called as Narad Bhakti Sutra. And where does it start from? कहां से शुरुआत करता है? You know, Narad always says Narayan, Narayan. Where does he start the Narad Bhakti Sutra from?
I got this from Shiva. Very amazing. He said, this is coming from Shiva. This is not me. He doesn't even say it is coming from Narayana. He says it is coming from Shiva. Amazing. The first thing he writes is, it is coming from Shiva. So you read any Shastra, it will start from, this is coming from my Guru. Whose Guru was he? Whose Guru was Shiva? Or Adi Yogi? Or the Shiva. Whenever we refer to Shiva, this Shiva is the fundamental of life we are referring to. So everything will come from the fundamental of life. Can it come from somewhere else? It cannot come from somewhere else. Because that fundamental life is bubbling in you also. That is why you are alive. So it is important that you address the fundamental of life and do your action. Karmanye vadhikaraste ma phaleshu kadachana. Why Krishna says this? Why Krishna says action is your prerogative, not the result? Because even behind the action, there is something else. Even behind your action, you are not there. There is something else. If you do an action, you will do only a petty action. If that entire life, the fundamental of life does an action, it will do an action which is more than what you can do. Success का सूत्र बता रहा हूं. Success manifestation, law of manifestation. I'm telling you, law of manifestation. If you will manifest something, you will manifest only petty things. You know, I want a Cuban cigar. What will you manifest? I want this experience. Small experience we want. So if you manifest, you'll only manifest small things. If the fundamental life manifests, it will manifest something which is beyond your imagination. So even if somebody becomes successful in life, he knows, I am not the doer. मैंने नहीं किया ये. Yes or no? So practical application. वापस आ जाते हैं. If you want to avoid karma mala, कर्म के टॉक्सिन्स अगर खत्म करना चाहते हैं, तो attribute your life to your ishta, to your guru, to the fundamental of life. वहां से शुरुआत करें. Start from there. So action के लिए सबसे कर्म के लिए सबसे पहला, what is the first thing that you should say? You are not a single entity. You are the entire universe. Aham Brahmasmi. Vidyarambham starts from here. Yes or no? इंडिया में विद्यारंभम क्यों शुरू किया जाता था? Because whatever you will do, ultimately you will destroy the world. So if you gain more information, you will destroy more. So earlier you could destroy a person, a life by a dagger. Now you can destroy the entire planet by pushing a button. So yes, Tattva Tvamasi, but the Vidyarambham Samskar would start from Aham Brahmasmi. Now, that is what responsibility everyone should take. If you are the entire cosmos, what will you destroy? Which finger you want to destroy?
you would never destroy anything. The whole education has become destructive because you're trying to just do for yourself. I. That is why we say ahamkara creates karma mala. Ahamkara is very important to be alive. But in terms of doing action, ahamkara is destructive. अण्व मल, माया मल, कर्म मल, थोड़ा सा और एक्सप्लेन इसको और इसमें जाएंगे. बट फॉर द गर्भाधान पीपल, जो गर्भाधान के लोग हैं, गर्भाधान, स्पेशली गर्भाधान पीपल, नोबडी एल्स, नॉट इवन गर्भ संस्कार, गर्भाधान के लोग केवल ये करेंगे. They'll do. So I am just giving you today, I am giving you a key. आज मैं की दे रहा हूं. How to come out of all this in one shot. I'm giving you a little key. Now, I'll not go on explaining it in detail because it will take many, many hours. It's so deep that if I start exploring that aspect, it will take not only hours, it will take days to explore that. So I'll go a little exploring these aspects. थोड़ा करेंगे. But first, गर्भाधान वाले सारे they'll do this process. कैसे करना है? लेट के करना. You have to lie down. So I'm telling you the process, so just finish the process and then get up. Whenever you finish the process, get up and लेटे लेटे भी आप सुन रहे होंगे. सुनने से अच्छा है कि you just do this process. See, ज्ञान से किसी का भी कुछ भला नहीं होता. एक्शन से होता है, एक्सपीरियंस से होता है. So you try to experience this process. Very simple process. बहुत सिंपल प्रोसेस है. Now 8 is very important here. 8 आप समझे. कंसेप्शन का क्या नंबर है? 8. 8 नंबर किसका है? और शनि का. शनि का नंबर 8 है. So 8, lie down. लेटना है आपको. You have to keep the feet together. पांव को साथ में रखना. You just have to keep the feet together. पांव को साथ में रखना है. Hands up, हाथ को ऊपर रखना. Hands need not be joined. हाथों को join करने की जरूरत नहीं. You can keep it open, but keep it up. So lying down, you keep the hands up, but the feet should be together. पांव साथ में रहेंगे. Now 8, you inhale 8 times from both the nostrils. दोनों नाक से 8 बार inhale करना. Inhale. इस तरीके से 8 times you inhale. You inhale 8 times, short inhalation, and then hold. उसको रोक लेंगे. You focus on स्वादिष्ठान. ये आपको मालूम है, you have to focus on स्वादिष्ठान. So you imagine a full moon at स्वादिष्ठान. स्वादिष्ठान पे एक full moon imagine करना है. You hold your breath. Apply मूल बंध. Anus को tight कर लें. And this imagination, it should be very strong imagination. ये imagination पे करना है. So this is more of a, इसे हम शक्तोपाय कहते हैं. अण्वोपाय, शक्तोपाय, शंभवोपाय. ये 3 methodologies हैं. This is त्रिका तंत्र. इसी को तंत्र कहते हैं, त्रिका तंत्र. So shambhavopaya is something which is completely on a different scale. But shaktopaya, anvopaya is something that you can do. आप कर सकते हैं. So shaktopaya, but in shaktopaya, you will not be doing it. Rather, you will allow something else to do it for you. दोबारा से समझें, आपको करना क्या है पहले ये देख लेते हैं. So you have to feel as if somebody is pulling you from above. So that moon, वो जो चांद है ना, वो रस्सी से बंधा हुआ है. The thread goes across your body till the top of your head. वो चांद जो है रस्सी से बंधा हुआ है और आपके सिर के ऊपर से निकल रहा है. Somebody else is pulling that rope very tightly. This you have to imagine. So inhale 8 times, hold. Anal lock and imagine this.
So feel it in your body. It is not just imagination. Again, because of the lack of vocabulary in English language. So you have to experience this. Allow yourself to experience this. You don't create this experience. You allow this experience to happen in you. So the moon at Swadhisthana is tied with a rope which goes through your body and it goes out from the top of your head. Somebody is pulling that thread up. You have to imagine this. Hold the breath till you are comfortable and then you exhale from the nostrils and relax. एक round हो गया. You did one round. एक round कर लिया. So once again, lying down, feet together, hands up, focus at Swadhisthana. Inhale 8 times. Moola bandha, inner lock लगा लो. And allow this experience to happen that somebody is pulling that moon, which is tied up with a rope, and the rope is going out through the top of your head. वहां से कोई खींच रहा है. आपको इस एक्सपीरियंस में आना है. ठीक है? And how do you know that you are getting that experience? The hold will become very comfortable. अगर आप सच में कर रहे हैं ये, the hold will become very easy. You will not be doing actually Kumbhak. It will happen on its own. Very comfortable hold will happen. Hold बहुत comfortable हो जाएगा. Right? 8 times करना. You have to do it 8 rounds. That's it. ठीक है? लेट के करेंगे. When you finished 8 rounds, get up. So all the 3 dosha or mala, how to ensure a lifestyle where you are creating all the 3 mala in a very less quantity. How to ensure that? So whatever the convenience of your time, first create the possibility of a good experience in your body the moment you get up. जैसे ही सुबह उठते हैं, you create the possibility of beautiful experience within you. So for that, what you need to ensure? What are you enthusiastic towards in your life? आपके जीवन का वो enthusiasm क्या है आपका? वो क्या इच्छा है जो आप करना चाहते हैं? So you should have a very strong desire to live this life. क्या? You should have a very strong desire to live this life, and what you want to do, you just fix that. वो जो बहुत इच्छा है आपकी, वो आपको निकालनी पड़ेगी. You have to create a very, very strong desire. So fix what you want to do in your life. Fix what you want to do today. If you are getting up in the morning today, you fix it. What do you want to do today? It doesn't matter what. You want to watch a beautiful movie? It's okay, but you should be very enthusiastic towards it. It doesn't matter what you want to do, but you should be very, very enthusiastic towards that. And always choose happiness over any other thing. So you can always keep yourself in a very beautiful state, even if you're not doing anything, sitting. Sitting can be blissful if you are happy within, isn't it? Walking can be blissful if you are happy within yourself. Look at a small kid, 4 years, 5 years. He's happy doing everything, anything. So why? Because he has strong desire to experience things. So whatever his eyes fall upon, he just gets engrossed in it, involved in it. So we have already told you, involve yourself in life.
It doesn't matter what you do, how you do is all that matters. Involvement होना चाहिए आपका. If you are even watching an ant, you know how involving is it to watch an ant crawling? Because you have some big things to do. Huh? You want to hold this whole earth upon your head. How can you enjoy a crawling of an ant? आप तो दुनिया चलाना चाहते हैं, इस चक्कर में जीना भूल गए. You are trying to run the world, but you have lost how to live your life, or you are not living your life for that. How will you be satisfied if you are not living your life? So, ये पहली चीज, the first thing, create a possibility of experience. Second thing you should realize is you are not doing anything in this world. Everything is happening on its own. In the world, in your body also, everything is happening on its own. So appreciate that factor, that bheda that you can't see. You can see the bhinnata, but appreciate the bheda. There is a connecting factor which is making it happen. And it is around you, surrounding you, inside you, outside you. It is just surrounding you. It is more living than you. There is a bigger life which has created a small life. Isn't it? There is no otherwise possibility. इसके विपरीत कोई possibility नहीं है. There is a bigger life which has created a small life. तो मां के गोद में रहते हैं तो कितना सुकून मिलता है. आप अगर मां के गोद में सिर रख दें तो कितना सुकून मिलता है. So you are just living in the lap of this big life. आप इस बड़े लाइफ के गोद में ही तो है. In the lap of this big life. And accept whatever something wrong you must have done, and there is a result for that. There is a suffering for that. ये जो बड़ी लाइफ है ना, ये धोखा नहीं करती. ये आपका ही कर्म आपको फल के रूप में देती है. So why don't you accept that which you are getting? Because your action has done something and you are getting it. तो accept the whole entirety of it. Accept कर लो ना. अगर आपको ये लाइफ फांसी देना चाहती है तो हंसते हुए फांसी पे क्यों नहीं चढ़ रहे? Whatever you are getting, accept it entirely, because it's your action which has created it. And whatever good that you are getting, nobody has to even say that you accept that. You want more. So why can't you accept everything, good and bad? It will create the right base where all the three toxins will slowly go off your life. आपके जीवन से ये तीनों के तीनों मल जो हैं वो निकलने लग जाएंगे. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. इसको अपने जीवन का सूत्र बना लीजिए. You have a right of action. You don't have the right on result. So do your action fully involved in the action. Do it, because only action can create experience. Result has nothing to do with it. Result जाके आपका एक्सपीरियंस खत्म हो जाएगा. What is the result of life? The end point is dead only, death. So death will take off the possibility of experience also.
from your life. तो रिजल्ट तो आपके एक्सपीरियंस की पॉसिबिलिटी खत्म कर देता. So get involved in action and do it fully involved. जितने बेस्ट तरीके से हो सकता है उतने बेस्ट तरीके से. जब आपका बच्चा गोद में आ जाता है तो इतना प्यार करो कि बस आखिरी बार मौका मिल रहा. यू आर गेटिंग वन लास्ट चांस. जब भोजन करते हैं तो ऐसा करें ना, दिस इज द लास्ट मील. Enjoy it in the best possible manner. When you are sitting with your spouse, enjoy the togetherness. कल सुबह कौन उठेगा किसी को पता नहीं. Nobody knows. It's a little opportunity to experience that togetherness. So involve yourself fully. Try to experience life fully. It doesn't matter what. अगर पोछा लगा रहे हैं तो ऐसे लगाओ ना कि इससे बेस्ट तो कोई पोछा ही नहीं लगा सकता. Mopping the floor should become the best act of your life. So if you do that, all the three mala, when your body feels happy, it doesn't create toxin. When your mind feels satisfied, it doesn't create toxin. When your life feels complete, it doesn't create toxin. एक short तरीका, one short way of getting something called as स्वास्थ्य, not health. Health से भी बड़ी चीज स्वास्थ्य. स्वास्थ्य means stabilizing yourself within yourself. स्वास्थ्य is the real definition of health. स्वयं स्थित is स्वास्थ्य. Stabilize yourself within yourself. If you do not stabilize yourself within yourself, you will create three toxins and disease on three different dimensions. So, पशु से पति तक जाना है, शव से शिव तक जाना है. The journey is from Shava to Shiva. From less aliveness to maximum aliveness. इसी को हम कहते हैं, aliveness is called as Ayush. The method of creating aliveness is called as Ayurveda. So create more aliveness in your life. But that aliveness should not be like running on a treadmill. It's an aliveness which will create disease. It's a load. Your aliveness should be very, very light on your system. You should be able to celebrate that aliveness, not feel heavy. So if you go towards creating that aliveness will create you, and that is called as Shambhavo Apaya. एक ऐसा समय आ जाता है, a time will come when you will not be able to evolve through your effort. Then something else will take over. इसी को कहते हैं, ईश्वर क्या कहते हैं, आप एक कदम तो बढ़ाओ, मैं 10 कदम आपके पास में आ जाऊंगा. So this is what is called as Ishwar Pranidhan. If you read Patanjali's Yoga Sutra, he describes Ishwara Pranidhana in a way. I am describing it to you in a completely different way. So you start with your effort. The effort will go on subtle level. When you start with your own effort, that is called as Anvo Upaya. Anvo Upaya. So what is Kumbhak? It is Anvo Upaya in the first stage.
then your effort goes in subtle level. On the first level, you do something, you fail, you again do it, and you become successful. But you go to second level, you just think and it happens. It is Shaktopaya. Initial first stage, you have to make an effort to hold your breath. Second stage, your breath will get held on its own. This is Shaktopaya. Third stage, you don't do any effort. Neither effort happens on subtle level. Something else takes you over. कोई दूसरा इंजन लग जाता है. And it does everything for you. Now you are in Ishwar Pranidhana. Shambhavo Upaya. That is Shambhavo Upaya. But you will have to start from Anuvopaya. No other option. If you don't put your effort, nothing is going to happen. By taking in a pill, you will create more karma mala, more anava mala. Taking pill is harmful, not just in terms of side effect. आपको कर्म दोष लगेगा. फ्री की चीज लोगे, कर्म दोष लगेगा. बिना एफर्ट के इवॉल्व होना चाहते हो, हेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, कर्म दोष लगेगा. आपका जीवन खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा. यू विल इवन लूज द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंसिंग लाइफ. In that manner, it is very, very harmful. So it is important that you put in your effort. And I am telling you, you just do your part. Don't bother about anything else. Karmanye vadikaraste ma phaleshu kadachana. Your life will transform beyond your imagination. So that is why I said, I'm just pushing you from the stage 1. Pehli सीढ़ी है. I'm pushing you. You don't even have to think where it will take you. I can guarantee you, it will take you to places the places that you haven't even imagined. It will not only transform your life, the physical aspect, it will transform the very quality of your life. And it will get you on track. By doing things, we are making ourselves go off track. Everything at this point of time, whatever is being done in the world, it is taking you off track. And there is no solution. There is no solution. Look, there is no solution. For anything, there is no solution. कीमोथेरेपी से लोगों को मार रहे हैं और वो बोल भी नहीं रहे, बात भी नहीं कर रहे इसके बारे में. Anybody who goes through chemotherapy dies within 10 to 15 years. Less than that. I have seen 2 years. And it is because of chemotherapy they are dying. Otherwise, they would have survived 15, 20 years. And it is increasing at the rate of 12% every year. Cancer. I'm talking about cancer. Solution kahan hai? Badha to rahe. Every effort in this world today is pushing humanity off track. And the repercussion will be seen in next 20 to 25 years. But you know, human memory is very short. You will have to connect these 25, 50 years to actually get to the conclusion that this is the wrong direction. But people are not that intelligent.
The more educated you become, the less intelligent you become. And that is why we are not able to connect the dots. कोई बात नहीं, अपनी लाइफ का डॉट कनेक्ट कर लो, बाकी तो छोड़िए. So let's do a process.